Yeah, good morning, friends. Welcome to the session. Start of a fresh day. कल काफी कंफ्यूजन रहा है मार्केट में बिकॉज हमने देखा कि एक इंडेक्स है वो डाइवर्जेंस आ रहा है विच मींस स्पॉट का क्लोजिंग और फ्यूचर्स का क्लोजिंग अलग है, तो इसको हम डाइवर्जेंस बोलेंगे। एक मार्केट में दो इंडाइसेस है, जैसे सेंसेक्स एंड निफ्टी। निफ्टी का क्लोजिंग अलग है, सेंसेक्स का क्लोजिंग अलग है। तो ये जो डाइवर्जेंस है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा आज का ओपन क्या बेस पे होगा। तो सबके लिए एक नई चीज थी और हमारे लिए भी एक नई चीज थी, तो हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा क्या कल की जो क्लोजिंग थी वहां से मार्केट कहाँ खुलेगा। सो ये जो डाइवर्जेंस है वो काफी कंफ्यूज कर रहा, मुझे भी नहीं पता चल रहा कि आज ओपनिंग जो होगा कल के क्लोज के बेस पे होगा कि कल 3:15 के वहां से मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। बिकॉज देखिए फ्यूचर्स वहीं के वहीं रहे, स्पॉट ऊपर चला गया, निफ्टी स्पॉट ऊपर चला गया, बट सेंसेक्स का स्पॉट वही का वही क्लोज हुआ 330 पे। तो एक मार्केट में दो क्लोजिंग नहीं हो सकता, भले आप बोलो एनएससी है बीएससी है, बट हमारे लिए तो मार्केट एक ही है। So this has created a confusion. So let's see how things work because सेंसेक्स में इफेक्ट नहीं है, निफ्टी में इफेक्ट है। सो इस तरह के डाइवर्जेंस टफ है समझना, इंटरप्रेट करना भी। और लेट्स सी हाउ थिंग्स ओपन टुडे। एक दो दिन का ओपन देखेंगे, उसके बाद ही हमें ख्याल आएगा कि क्लोजिंग को हम कैसे इंटरप्रेट करें। Before I start, I'll read out the disclaimer. This is for educational and informational purposes only and it does not constitute financial advice. So देखते 4 अगस्त को हमारे इंडाइसेस क्या है, विक्स क्या है, कोई सेक्टर इंडेक्स में खास देखने जैसा है, ग्लोबल इंडेक्स में एक बार नजर देख के आते। So yeah, Arvind, good morning. Satyanarayan, IB Mathematics, खुशबू, वेलकम बैक अतुल। सो मेरे लिए भी ये क्लोजिंग नया ही है, तो ऑनेस्टली मुझे भी इतना नहीं समझ में आ रहा। यो Hortiglance 7165, sir, your name, because this YouTube gives some crazy names. So let's start. हम अपना प्रोसेस नहीं छोड़ेंगे। मॉर्निंग में एवरीथिंग लुक्स पॉजिटिव। कल यूएस मार्केट्स करीब करीब 600 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, नैस्डैक 2% ऊपर बंद हुआ, तो एक तरह से मार्केट का मूव पॉजिटिव है। या कमलेश जी नमस्ते। हेडलाइंस बोल रहे यूएस फ्यूचर्स एज हायर विद ईरान टॉक्स क्वार्टर टू अर्निंग इन फोकस। तो नेगेटिव कुछ भी नहीं है ओपन में आज। एक बार एशिया देख लेते हैं हम, जब खुलने वाले हैं तब एशिया जैसे निकाय है और सारे इंडाइसेस हैंगसेंग वो ट्रेड करते हैं, तो एक एशिया का हमें एक पर्सपेक्टिव देखना चाहिए एज ए ट्रेडर। या यूएस फ्यूचर्स ग्रीन दिख रहे हैं, यूरोप ग्रीन दिख रहा है, ब्राजील डाउन है, निकाय 145 पॉइंट्स डाउन है। तो मार्केट हम मिक्स बोलेंगे, बहुत कुछ ज्यादा रीड करने जैसा नहीं है। मार्केट विल मूव इन इट्स ओन स्ट्रेंथ। और बिफोर आई स्टार्ट, देखिए येस्टरडे हाउ मेनी ऑफ यू ऑब्जर्व दैट जो कल हमने पैटर्न डिस्कस किया था मार्केट का, जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी, दो चीज पॉसिबल है। अभी क्लोजिंग की कैंडल आप भूल जाओ सर। कल हमने एक चीज देखी थी, मार्केट ओपन होगा एक रेंज में, लेट फाइन, ये हमने 15 या 5 मिनट की रेंज मार्क की थी बेस्ड ऑन योर टेम्परामेंट फॉर रिस्क। दो चीज पॉसिबल थी, हमने बोला 5 या 15 मिनट के बाद मार्केट अगर हाई निकालता है तो आपको एक अपसाइड मिलेगा। डिड इट वर्क दैट वे? यस। ये देखिए 15 मिनट की रेंज थी और मार्केट ने हाई निकाला, और हमने बोला था जब तक हाई नहीं निकालेगा 15 मिनट्स की तब तक काम नहीं करना। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस पैटर्न? देखिए ये पैटर्न है, कोई टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी, इट्स ऑब्जर्वेशनल इन नेचर बेस्ड आउट ऑफ रीडिंग द मार्केट्स। एनीबडी? अतुल ये देखा था? GLN Murthy, good morning. Yes. How many of you observe this pattern? These are called ORB and ORB is very relevant when market is, देखिए अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है ना तो आपको मौका नहीं देगा कि खुलने के बाद आपके सपोर्ट पे आए, यू ड्रॉ सम लेवल्स, देयर यू हैव टू शो अ सर्टेन डिग्री ऑफ प्रिपरेशन हाउ टू ट्रेड अ फास्ट मूविंग मार्केट। Abhijit, let's wait. Abhijit, don't conclude. So this is how yesterday panned out based on what we had done. So let's start. Yeah, first we'll just watch crude. Don't get excited, Abhijit.
गो स्टेप बाय स्टेप। क्रूड में देखिए तो क्रूड मोर और लेस ट्रेंड चेंज के यहाँ पे, इफ इट ब्रेक्स द लो द ट्रेंड फॉर द क्रूड विल चेंज टू डाउन, एंड हम लोग क्रूड में एक मंदी देखने मिलेगी, और एल्स आई एम एक्सपेक्टिंग क्रूड टू बी आइदर साइडवेज टू डाउन। अब तो मुझे क्रूड लग नहीं रहा। अब हाँ, कुछ अनटूवर्ड हो सकता है ईरान में, तो दूसरी बात है, तो उस पे बेसिस में मैं स्पेकुलेट नहीं करूंगा। आई जस्ट टॉक ऑन व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग ऑन द प्राइस चार्ट्स। आफ्टर दिस लेट्स सी इंडिया विक्स, गिफ्ट निफ्टी लास्ट में लाते, विल ब्रिंग इन गिफ्ट निफ्टी एट द लास्ट। दिस इज इंडिया विक्स। व्हाट वी हैव सीन इज इंडिया विक्स एक चैनल का मूव है, और क्या इंडिया विक्स एक स्पाइक मारेगा यहाँ तक, विच इज 7 तक कभी गया नहीं है। आई थिंक कहीं ना कहीं एक लेवल पे रुक जाएगा, विच इज समवेयर अराउंड 8 और 10, बट दिस इज पॉजिटिव फॉर द मार्केट्स, नॉट डे टू डे बेसिस बट शॉर्ट टर्म। इंडिया विक्स अगर एक चैनल में कंटेंट है, चैनल टूट नहीं रहा, दैट मीन्स इट्स मूव वोलेटिलिटी रिजीम जो है, वी आर इनटू अ लो वोलेटाइल रिजीम। तो इंडिया विक्स जब भी डिप मारता, निफ्टी में एक स्पाइक रहता, रिमेंबर दैट। और ये लेवल पे इंडिया विक्स एकदम साइडवेज हो गया, मार्क करिए। तो एक बार वॉलेटिलिटी में थोड़ा स्पाइक्स आ सकते हैं, विच साइड इवन आई डोंट नो, ब्रेक करने दीजिए। सो इंडिया विक्स इज टेकन केयर ऑफ, एक्सेप्ट कर लो, लो वॉलेटाइल रेजिम है। हाउ डज इट अफेक्ट योर ट्रेडिंग? इट अफेक्ट्स योर ट्रेडिंग इज शार्प मूव्स आ सकते हैं, बिकॉज इतने कम वॉलेटिलिटी में स्पाइक हुआ ना, तो प्रीमियम में शार्प मूव्स आते हैं, और एल्स प्रीमियम को हम ये लेवल पे बोलेंगे प्रीमियम आर डिफ्लेटेड। मतलब जो प्रीमियम 60 का होगा, जस्ट फॉर इट्स नॉट एग्जैक्ट नंबर्स, वो प्रीमियम अभी 45-50 का होगा। सो सेम लेवल अगर पहले आप देखोगे एटीएम या ओटीएम 1, so वो हिसाब से VIX is not showing anything untoward happening in the markets right now. That means market will trade on its own strength. इसके बाद हम चलते गिफ्ट निफ्टी के, अभिजीत। If I look at Gift Nifty is currently trading with a loss of 17 points. So Gift Nifty का opening flat है. I repeat, Gift Nifty opening flat, Abhijit, is not showing any indication. और कल का जो यहाँ पे स्पाइक आया, उसका गिफ्ट निफ्टी में भी कोई एडजस्टमेंट्स है नहीं, इन द सेंस कि गिफ्ट निफ्टी वहां तक गया नहीं है। तो ये और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, हमें आज का दिन देखना पड़ेगा। एंड लेट्स, अभी प्रॉब्लम क्या है ना, मैं निफ्टी के चार्ट्स पे जाऊंगा तो क्या रेजिस्टेंस कल का क्लोजिंग पे जो हाई मारा था उसके बेसिस पे लो। तो दिस इज अ बिग कंफ्यूजन विच एवरी ट्रेडर इज हैविंग। लाइक अभिजीत आपने जो क्वेश्चन पूछा, इवन आई एम हैविंग द सेम, राइट? So after this, let's go to Nifty. So निफ्टी में अगर 5 मिनट पे जाओ तो कल का सेंसेक्स का देखिए क्लोजिंग, सेंसेक्स क्लोजिंग इज हियर ओनली। निफ्टी में एक उछाल आ गया करीब करीब 1% का, अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट्स पे जाओ तो। तो इससे कंफ्यूजन तो आ रहा, नो डाउट अबाउट इट, मेरे मन में भी, कैसे मैं इसको प्राइस चार्ट्स पे ट्रीट करूं। क्या ये क्लोजिंग का बार को मैं इग्नोर कर दूं? अगर इग्नोर करना है तो आपको फिर नहीं, लाइन चार्ट पे भी जाओगे तो इग्नोर होगा नहीं, तो एक बार तो स्टैम्प आ ही गया तो कुछ नहीं कर सकते इसको। बट सेंसेक्स यहीं का ही क्लोजिंग, एक मार्केट है जहाँ पे डाइवर्जेंस है बिटवीन द सेम एक्सचेंज बिटवीन कैश एंड फ्यूचर्स, स्पॉट एंड फ्यूचर्स, एंड सेम मार्केट्स वेयर देयर आर टू इंडाइसेस है हमारे यहाँ, सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स का क्लोजिंग यहाँ पे ही है, और निफ्टी भाग गया, तो इवन आई डोंट नो। So let's just follow the plan. So मैं क्या करूँगा ना, I'll drop a line. Let's assume I am ignoring it. Fine. इग्नोर करना भी सही नहीं होगा, बट assuming फाइन, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉप कर देता हूँ, इसको हाई मान के चल रहा हूँ। इज इट मेकिंग सेंस एवरीबडी? लेट मी सी। अभी मार्केट खुल रहा कहाँ, उस पर डिपेंड कर रहा है। So this has like put a lots of this thing confusion even in my mind. मैं कैसे प्राइस को एनालाइज करूँ? So yeah, so मैं कल का वही हाई ले रहा हूँ। So
कल का जो हाई है विच इज एग्जैक्टली एट द स्विंग हाई रेजिस्टेंस के पास. So this high is going to be the resistance and level for a breakout trade. So I remove it. उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे एक गैप है और ये गैप को हल्के में मत लो, ये वीकली गैप है. वीकली गैप रेयर रहते हैं. So this is how first I'm trying to mark. मेरे लिए भी नया दिन है, so I'll have to be थोड़ा assumption पे मैं काम कर रहा हूँ आज. तो वो हाई निकल गया तो आप देखिए फिर यहाँ पे आ जाओ जहाँ पे सेलर्स है. इस लाइन ड्रॉप कर दो चार्ट्स पे. उसके बाद नेक्स्ट लेवल इज वे अप हियर ऑन निफ्टी. ये स्पाइक देख रहे हो 5 मार्च 2026 का. सो देन ऑन अ 60 मिनट्स आई विल टेक दिस एंटायर 800, या तो मैं इसको ले रहा हूँ, ये स्मॉल लिटिल कैंडल ओवर हियर, और एक्सटेंड कर देता हूँ. So this is I have taken care of my levels on a 60 minutes time frame charts, and I am ignoring this candle. Is ignoring the right thing or the wrong thing, I don't know. पहली बार हुआ है और डाइवर्जेंस अगर है तो मैं सेंसेक्स पे भी ये स्टैम्प आया नहीं है. सो लेट्स सी, आज खुलने के बाद ही पता चलेगा. राइट. Thank you so much, Mr. Murthy. Do drop a comment after the session ends in the comment window now. ये एक ब्रेकआउट लेवल है और ये कल का लो है, which is very very relevant. So this low to me is my support, demand, or whatever you want to call for the day. So अगर ये support को मैं see, always remember one thing. How to show you? Let me show you. Right. अगर overall conditions are positive, right? I repeat, overall conditions are positive. See, this was previous day's range. It gave a breakout. So जब intraday में when there was a dip, this acted as a support, and then again market moved up. Give me a yes if you have all understood this. When markets are trending up, 200 DA में तो बहुत ऊपर आ रहे. Again over here, ये सब पैटर्न टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी. इट्स ऑब्जर्वेशनल. इट गेव अ ब्रेकआउट, केम डाउन, but did not break the low. Are you marking this thing? Previous day's low theory, what we follow. I wouldn't call it theory, more of a guideline. Everybody give me a yes. Fine. Similarly, I will use the same guidelines right now for my marking of my support. If it breaks, it will be a big surprise to me. Now, let me remove this part. And yesterday's range breakout itself is now a support to me. Does it now look logical, everybody? Yeah, I'm getting yes. Okay. GLN Murthy 4575. Thank you, sir, for your nice words in the morning. So now be a bit more this thing. So this is the range for the market. I'm ignoring the close. Is ignoring the right thing, wrong thing? I don't know. Divergence is there. So let's see. So this is going to be your breakout level. If market opens flat and this low is a support, till this low does not break, I think we are on the positive side. Once this low breaks, then only you come to the trend line. How many of you remember we are following the trend line from the lows, which is from here to here? Dekhte where it comes. Fine, and I'll mark a channel. This is close blow off, but yeah. So then I would put it this way. This is how market 2 is today. Everybody clear about it? You know why I'm treating this low? It's nothing but the previous day's low. Small candle breaks up, small candle breaks up, and the continuation happen. Only when I see, or we all see on the price charts, if market breaks the previous day low, that will give us a sense of loss of momentum. We can't uh, guess as a trader. We just trade what the current price action is showing. So that's Nifty. Now let's move to Bank Nifty.
So today is also Nifty expiry. So Bank Nifty also I'll do the same thing. I'll drop a line at yesterday's high. I am ignoring the close. Again, I said, is it a right or wrong thing? Even I don't know. It's a first day for me also. So then I go to the daily price chart. Bank Nifty has closed above the 200 DMA. And then you have this high here. Remember, we were working with this as a resistance. Then I come to my 60 minutes time frame chart. And then I come to my 15 minutes time frame chart. Even see, follow this rule, friends. You will get your good trades. Yesterday, Bank Nifty, there was this range breakout. So this range breakout itself becomes the support for the next day. Same day also. See, once it came here and gave you 150, 200 points, again it came here. The logic is a stronger market as a day traders or momentum traders. We maintain a positive bias. जब तक वो लो नहीं टूट रहा है. So this is the immediate, और इसके अलावा आई एम इग्नोरिंग दिस इज द ब्रेकआउट लेवल एंड अभी यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हैं ये जोन पे. सो अगर ये निकल गया लाइक निफ्टी यू हैव अ स्मॉल लिटिल कैंडल हियर, राइट. आई विल कम बैक टू द करंट प्राइस. So this is how Bank Nifty is with confusion of yesterday's. So मैं ये green candle honestly I am ignoring. अगेन मैं बोल रहा हूँ, इज इट राइट थिंग और रॉन्ग थिंग, मेरे लिए भी पहली बार है, आपके लिए भी पहली बार है. एक दो दिन देखते हाउ प्राइसेस बिहेव विद रिस्पेक्ट टू दैट न्यू क्लोजिंग regime CAS एंड देन विल एडजस्ट आवरसेल्फ. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप बैंक निफ्टी में देखो देयर इज नो चैनल इज नाउ आई थिंक हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे चैनल, बट ये चैनल आज के लिए कोई रेलेवेंस नहीं है. सो वी फॉर्म द न्यू वन which is take this lows and extend it. So ये channel gap के अंदर में आ रहा, so we now can't call it a channel. We have to just call it as a lower trend line, confirmed lower trend line. And this is how Bank Nifty is positioned. So this level is a breakout, then the resistance, then here. Because yeah, आपके चार्ट पे तो ये कैंडल दिखेगा ही, so आपको एक बार डिस्ट्रैक्शन भी आएगा, no doubt about it. Rohit Agarwal says now it's setting down and Nifty came to yeah Rohit, देखिए कोई नई चीज है, नया टाइम स्टैम्प, नया स्टैम्प आया प्राइस पे और नए रूल्स के साथ, तो ऑब्जर्व करते, हड़बड़ी नहीं करते, एक दो दिन एटलीस्ट देख लेते कैसे मार्केट क्लोजिंग के बेस पे खुलता है. सो अगर इस तरह का क्लोजिंग हुआ तो रोज आपका गैप अप गैप डाउन होगा. कल अभी 58,247 पे तो खुलेगा नहीं ना बैंक निफ्टी, तो बाय डिफॉल्ट इट्स गैप डाउन. सो व्हाट दिस हैज डन इज it will now create daily very big gap up and gap down, which is very confusing, horrible. Gap up and down. Now this gap up and gap down is based on not any technical events or price action. It's just based on some administrative event about this thing, the closing. So इसको हम कैसे टैकल करेंगे? I don't have any answer right now. I'll be observing. रोज देखने तो मिलेगा gap up, gap down. So daily this thing, how to adjust it, even as time progresses, we'll make a plan. Don't worry. और जब observations clear रहेंगे, guidelines will be well defined, I'll come out with a note on a Substack detailing this. ये चीज समझने के लिए मुझे भी at least I have to watch it for a day or two. So that's all from my side, friends. Make sure once I end the session, you do post your comment after I close the session in the comment section. GLN Murthy and all the participants, IB Mathematics. Urmila is not there. Jai Hind Investments, नहीं जय हिंद इन्वेस्टमेंट 9:30 बजे तक रुक जाओ एक बार. कौस्तम, fine. Yajur. So that's all from my side. Thanks and have a nice day.